अस्सलाम वालेकुम। सर्च न्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान खुआद। पाक फौज की इंक्वायरी मुकम्मल। IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई। ISPR के मुताबिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिश पर मुतालिका आएगी। मज़ार कायद बेहुरमती का मामला IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पाक फौज की इंक्वायरी मुकम्मल आ गया। ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई GHQ में की जाएगी। मज़ार कायद बेहुरमती का पाकिस्तान के हुक्म पर की गई। ISPR के मुताबिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिश पर मुतालिका ऑफिसर्स को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है, जबकि ज़ाब्ते की खिलाफ पाक फौज की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। ISPR के मुताबिक IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई। कार्रवाई GHQ में की जाएगी। मज़ार कायद बेहुरमती के मामले के हवाले से आपको बता रहे हैं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिश पर मुतालिका ऑफिसर्स को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। IG सिंध ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। उन तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार पर पाक फौज ने अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई। ISPR ने बताया कि ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई GHQ में की जाएगी। IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पाक फौज की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। ISPR के मुताबिक IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई। मज़ार कायद बेहुरमती का मामला कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिश पर मुतालिका ऑफिसर्स को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया, जबकि ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई GHQ में की जाएगी। IG सिंध ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जिसके बाद पाक फौज ने अपनी इंक्वायरी स्टार्ट की और अपनी इंक्वायरी को मुकम्मल कर दिया गया है। ये इंक्वायरी IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई। ISPR ने यह भी बताया है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिश पर मुतालिका ऑफिसर्स को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। डायरेक्टर करंट अफेयर्स सर्च न्यूज़ नदीम हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नदीम हुसैन साहब, IG सिंध ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जिसके बाद पाक फौज ने अपनी इंक्वायरी को मुकम्मल कर लिया है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिश पर मुतालिका ऑफिसर्स को जिम्मेदारियों से भी हटा दिया गया है। देखिए, एक डिसिप्लिन अदारे की जानिब से एक डिसिप्लिन रद्द-ए-अमल जो है वो आना चाहिए था और वो रद्द-ए-अमल जो है वो आया है। अगर आप उस वाक़े के ऊपर चले जाएं और जो कायद-ए-आज़म के मज़ार पर बेहुरमती की बात हुई थी और उसके नतीजे में जो सारा एक सिलसिला जो है वो दरपेश हुआ था और सिंध पुलिस के आला अफसरान जो हैं वो छुट्टियों पर जा रहे थे, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आर्मी चीफ से ये दरख्वास्त की थी कि वो इसके ऊपर जो है वो मुदाखलत करें। उसके बाद जो है आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी से भी राब्ता किया था और ये यकीन दहानी कराई गई थी कि इसके ऊपर जो है एक इंक्वायरी कंडक्ट जो है वो की जाएगी और उसके बाद फिर कोर कमांडर कराची जो हैं उनको ये जिम्मेदारी तफवीज़ की गई थी कि वो इसकी इंक्वायरी करें और फिर ये रिपोर्ट जो है इसको जल्द से जल्द सबमिट करें। और उस वक्त ये भी कहा गया था कि जो भी रिपोर्ट होगी उसको मंजर आम पे भी लाया जाएगा। अब ये इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो गई है और जाहिर है कि इस इंक्वायरी के नतीजे में जो बातें सामने आई हैं उसके नतीजे में उन अफसरान को जो है वो जिम्मेदारियों से सुबकदोश किया गया है और अब बाकी मामला जो उनके खिलाफ कार्रवाई है वो GHQ में होगी। लेकिन ये सारा सिलसिला जो है वो अब यहाँ तक नहीं रुकना चाहिए था। जाहिर है फौज एक ऑर्गेनाइज्ड इदारा है, एक डिसिप्लिन्ड इदारा है और उसने उस तरीके से जो है अपना एक रद्द-ए-अमल जो है वो दिया है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उन्होंने जो बात कही थी उसके ऊपर वो अमल पैरा भी हुए और जाहिर है कि जो इस पे पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब दूर हो जाएंगे। लेकिन देखना ये है कि अगर किसी इदारे के अफसरान ने रिपोर्ट के अंदर जो ओवरवेलमिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि बियॉन्ड अपने स्कोप और पैरामीटर से बाहर जाके उन्होंने एक्ट किया है, तो क्या जो पुलिस इस वक्त एक पैरेलल रिपोर्ट बना रही है उसके अंदर वहां पर भी इस चीज का तयन हो पाएगा। और दूसरी चीज ये है कि ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हो गया, जाहिर है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा और वो पॉलिटिकल प्रेशर उस वक्त था भी और उसके अंदर कुछ वफाकी वज़रा, कुछ सूबाई अरकान असेंबली जो हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व थे और उसको एक
जो सिलसिला था बढ़ाया जा रहा था, तो क्या ये इसके पैरामीटर को जरा वसी करते हुए इस इंक्वायरी का जो दायरा कार है वो उसी शफाफियत का होगा पुलिस की सतह पर और फिर सियासी सतह पर, ये एक देखने की बात है। लेकिन जहां तक आर्मी का ताल्लुक है, उन्होंने अपने एक डिसिप्लिन फोर्स होने का सबूत होते हुए उस चीज पे रिएक्ट किया जो बियॉन्ड अथॉरिटी और बियॉन्ड स्कोप था, और उसके ऊपर जो है एक एक्शन जो है वो सामने आया है। नजीम साहब, एक जानिब ये मामला और इस पर बड़े वाज़ेह तहकीकात सामने आई, जो लोग मुलविस थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, तो यकीनी तौर पर जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनको वाज़ेह मैसेज गया कि गलती जो भी करेगा उसको वाज़ेह सज़ा दी जाएगी। लेकिन जो कैप्टन सफदर का मामला है वो यकीनी तौर पर अपने तौर पर अदालत में चलेगा। देखिए, वो एक अलग चीज है। मामला ये था कि एक सिलसिला ऐसा हुआ जिसके नतीजे में सिंध की जो पुलिस फोर्स की आला क़यादत है उनको ये एहसास हुआ कि उनकी डिग्निटी जो है वो चैलेंज हुई है और उनका जो कमांड लेवल है वो चैलेंज हुआ है, और जाहिर है कि उसके नतीजे में आईजी पुलिस जो थे और बाकी लोग जो थे उन्होंने छुट्टियों पर जाने की दरखास्तें दे दी और कहा कि ऐसे माहौल में जो है वो काम नहीं हो सकता। और वो पूरी पुलिस फोर्स जो है वो एक किस्म का एक रेबेलियस एटीट्यूड था कि ये जो हुआ है उसके ऊपर। तो जाहिर है कि अगर वो उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, वो आर्मी चीफ से ये दरखास्त ना करते कि वो खुद मुदाखलत करें और इस मामले को जो है वो सुलझाने की कोशिश करें, तो जाहिर है कि आर्मी चीफ ने उस चीज का नोटिस लिया, उन्होंने कोर कमांडर को हदायत भी की, उन्होंने इस बात को भी यकीनी बनाया कि अगर पैरामीटर और स्कोप से कोई अफसरान हटे हैं तो फिर उनको उनकी जिम्मेदारियों से सुबकदोश भी किया जाए, और जो डिसिप्लिन की कार्रवाई है वो जाहिर है कि वो जीएचक्यू के अंदर होगी और उनको जिस नौयत की रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस दी गई होंगी उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद होगा। लेकिन ये जो सारी सूरत हाल है इसके अंदर ये सिर्फ एक पहलू है, ये डिसिप्लिनरी पहलू था जो एक डिसिप्लिनरी इदारे ने जो है एक्नॉलेज किया और उसके ऊपर अपना एक रद्द-ए-अमल दिया, और ये बात आगे जाहिर की कि इस इदारे के अंदर गलती की गुंजाइश नहीं है, और अगर गलती होगी तो उसकी सजा जो है वो मिलेगी और दी भी जाएगी। लेकिन उसके साथ जो पैरेलल बाकी चीजें हैं, क्या पुलिस की इंक्वायरी भी इतनी शफाफ होगी जो सिंध की हुकूमत जो इंक्वायरी करवा रही है क्या वो भी इतनी ही शफाफ होगी, और क्या जो पॉलिटिकल प्रेशर उस वक्त डाला गया था वो भी मंजरे आम पर आएगा, उसमें भी किरदारों का तयन होगा, वो भी कोई उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये इस बेंचमार्क ने ये सवालात छोड़ दिए हैं कि ठीक है एक डिसिप्लिन्ड अदारा है, वहां पे तो सजा और जजा का अमल बड़ा शदीद है, बड़ा सख्त है और उसके अंदर वो उठाया गया है, लेकिन बाकी जगहों के ऊपर अगर मामला जो है स्कॉट फ्री जाना है तो फिर जो बहसियत मजमूई सूरत हाल है वो बेहतर नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम हुसैन साहब, डायरेक्टर करंट अफेयर्स सच न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे, अपने तज्जिए से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे हैं। Disrupting livelihoods. Over 50 million people have been affected by the virus, and more than 1.2 million people have lost their lives. The devastating impact of the virus has affected all aspects of human interaction, and especially public health and the global economy. While progress has been reported in vaccine research, it is unclear as to when the vaccine will become universally available. Humanity faces the possibility of a slow recovery and prolonged economic slump with rising poverty and inequality. Under the circumstances, the imperative of a common approaches to limit the spread of the infectious diseases, reduce the effects and develop potential remedies has increased manifold. Yet, global harmony, multilateralism are undermined by rising geopolitical tensions, unilateralism, and isolationism.
We believe that the SCO fraternity, with its core principles of solidarity and mutual support, would be effective in combating the effects of COVID-19. Excellencies, this year CHS coincides with completion of 20 years of the establishment of the SCO. Over the past 2 decades, SCO's prestige and influence have grown significantly. At a time when the world is bereft of global vision and shared solutions, SCO has called for effective multilateralism, with the UN playing a central coordinating role. Pakistan also deeply appreciates China's effective handling of the virus, and also the material and technical assistance extended by China to others, including Pakistan. China and Pakistan also are collaborating in vaccine development, with phase 3 trials successfully underway. On its part, Pakistan is open to sharing its own experience in effectively combating the pandemic and keeping the total cases and fatalities relatively low. Our collaborated policy of smart lockdowns and financial support to the most vulnerable segments of the society prevented rapid community spread, protected the poorest from the worst fallouts of the lockdown, and helped stabilize the economy. Our aim has been not only to save people from the virus, but also save people from dying of hunger. Globally, the international community has taken some welcome steps to mitigate the adverse effects of COVID-19. But much more needs to be done, particularly for the poor, who are hit the hardest, both in rich and the poor nations. In this spirit, I proposed a global initiative for debt relief to address debt vulnerabilities of the developing world and to help create fiscal space for them to mitigate the impact of pandemic and achieve sustainable development. We welcome measures taken by the G20 and the international financial institutions to help developing countries, in particular least developed countries, to face economic challenges posed by the pandemic. Further steps are needed to help improve liquidity in developing countries and restore growth. Excellencies, the foreign policy goals of my government are in sync with the SCO's vision of regional connectivity and economic integration. SCO is destined to play a pivotal role in the emerging confluence between the Belt and Road Initiative and Eurasian Economic Union. Pakistan's geographical location provides it an ideal opportunity to crystallize the benefits accrued from the process. The China-Pakistan Economic Corridor, the flagship project of BRI, is poised to play a vital role in this regard. Excellencies, the Shanghai Cooperation Organization was established to ensure security and maintain stability across the vast Eurasian continent. Join forces to counter emerging challenges and threats, and enhance trade as well as cultural cooperation. SCO stands for strict observance of this principle and the principles of the UN Charter, such as equality and sovereignty of states, respect for territorial integrity, sanctity of borders, non-aggression, non-use or threat of force, and people's right for self-determination. On the occasion of the 75th anniversary of the United Nations, we strongly support the central role of the United Nations in maintaining international peace and security and advancing global sustainable development. We stress the importance of faithfully implementing UN Security Council resolutions for peaceful solutions of outstanding disputes to create an environment of stability and cooperation.
unilateral and illegal measures to change the status of disputed territories in violation of the UN Security Council resolutions run counter to this objective and adversely affect regional environment. Such measures must be condemned and opposed resolutely for being in violation of the SCO Charter and its well-established principles of interstate relations. Excellencies, I have consistently stressed that there is no military solution to the conflict in Afghanistan and that a negotiated political settlement is the best way forward. As a shared responsibility, Pakistan has steadfastly supported the Afghan-led and the Afghan-owned peace process. Our positive contribution facilitated the US-Taliban peace agreement. The Afghan parties must seize this historic opportunity, work together constructively and secure an inclusive, broad-based and comprehensive political settlement through intra-Afghan negotiations. Reduction in violence is absolutely imperative to help strengthen the momentum reached through these positive developments. We must also remain mindful of the challenges ahead, especially the role of the spoilers within and outside who do not want peace and stability to return to Afghanistan. Return of the Afghan refugees to their homeland with dignity and honor should be an essential part of the peace negotiations. On the Iranian nuclear issue, we share SCO's call for effective implementation of the Joint Comprehensive Plan of Action. We join ISCO partners in focusing on the prevention of an arms race in outer space and international information security. The overarching goal of the international security architecture should be the promotion of equal and undiminished security of all states. We welcome the emphasis by the SCO members on data security. In this regard, we strongly support China's Global Digital Data Security Initiative. We reiterate our strong support for coordinating our efforts at this relevant multilateral fora to counter the growing menace of narcotic drugs. Excellencies, Pakistan has been in the forefront of the struggle against terrorism. Our resolve to continue this fight remains undeterred. We believe it is wrong to use terrorism-related allegations as a political tool to malign and target any country, religion, or race. It's critical to address the scourge of terrorism in all its forms and manifestations, including state terrorism perpetrated against people living under foreign occupation and disputed territories. As we commemorate the 75th anniversary of the defeat of Nazism and fascism during the Second World War, we must learn lessons from history and work to ensure against the resurgence of such destructive ideologies. We must also continue to steadfastly oppose extremist and xenophobic tendencies, including racist ideologies inspired by neo-Nazism and Islamophobia. We must resolutely oppose divisive policies based on prejudice and discrimination and focus on building interfaith and cross-cultural bridges. It is imperative that willful provocations and incitement to hate, especially on religious grounds, are universally outlawed. Deliberately insulting religions and sacred religious symbols provokes hatred and violent extremism, leading to further polarization and fragmentation of humanity. Therefore, SCO members should continue to call for mutual respect of all religions and beliefs and for fostering a culture of peace, fraternity, and harmony. Excellencies, my government is
particularly focused on providing relief to the poor segments of the society. And this inspiration we have got from the way China raised 700 million out of poverty in the last 30 years. In this context, we thank all members of supporting our initiative for establishing an SCO special working group on poverty alleviation. We must pool our efforts to fight the threat posed by climate change. It is important that all commitments made in the Paris Agreement on climate change are fulfilled. In particular, the commitment to mobilize $100 billion annually as climate finance. On its part, Pakistan is making renewed efforts to mitigate adverse effects of climate change. We have launched an ecosystem restoration initiative. I repeat, ecosystem restoration initiative, which includes the planting of 10 billion trees in the next 3 years. Fighting corruption and economic crimes is another important area of focus for my government. We welcome SCO's emphasis on strengthening international cooperation in fighting these menaces. We must firmly oppose illicit financial flows from developing countries, which impoverish these nations and severely retard their development endeavors. Efforts must be made to bring back the stolen wealth to enable the affected nations realize their legitimate aspirations for development and a hopeful future. I would like to express Pakistan's gratification on becoming a member of the SCO Youth Council. With 65% of our population under the age of 30, Pakistan highly values cooperation in tapping the immense potential of our youth and involving them in the socio-economic uplift of our societies. Excellencies, going forward, I would like to make 6 specific proposals aimed at galvanizing our mutually beneficially, result-oriented efforts through the SCO platforms. First, we should create an SCO knowledge bank of best practices to fight COVID-19 in order to guide us through the second wave and beyond. Second, we should work out a strategy as an SCO action plan to mitigate the adverse effects on the economy of COVID-19. And it should be short-term, medium, and long-term, including by prioritization an SCO unified framework for emergency preparations developed in consultation with the WHO. Number 3, we should take a united stand that the COVID-19 vaccine must be viewed as a global public good, affordable and accessible to all. Fourth, we should call for more measures by G20 to meet common challenges like climate change, deteriorating environment, widening inequality within and among nations, poverty, disease, hunger and sustainable development, and above all, the illicit movement of money from developing world to offshore bank accounts to rich countries, which is devastating the developing world. Fifth, we should formulate a multi-year SCO youth strategy with a focus on building partnerships among educational institutions. Sixth, we should develop SCO partnership for technology, offering scholarships and exchange programs for youth in the scientific field. I wish this meeting all the success. Thank you.